हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। हम किस तरीके से फंक्शन का यूज करते हैं पाइथन में, किस तरीके से हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस को बनाते हैं, किस टाइप के बिल्ट इन फंक्शंस हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं। इन सारी की सारी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ना। सो लेट बी स्टार्ट द हैंड्स ऑन। तो सबसे पहले नंबर हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द फंक्शन। फंक्शन इज नथिंग, इट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड इट मीन्स दैट यदि मैं कंटिन्यूअसली एक कोड को लिख रहा हूँ बहुत सारा और उस कोड को मैं रीयूजेबिलिटी के फॉर्म में यूज करना चाहता हूँ। इट मीन्स आई वांट टू यू रीयूज माय कोड, मतलब मैं एक बार कोड का ब्लॉक लिख चुका हूँ और उसको बार बार मैं यूज करना चाहता हूँ। सो द फंक्शन इज द राइट वे टू डू दिस। हम क्या करेंगे, एक कोड के ब्लॉक को एक फंक्शन के फॉर्म में बना देंगे और जब भी हमें ज़रूरत होगी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे या कहीं पर भी हम अपने सेकंड कोड में जो अदर कोड रहेगा वहाँ पर अपने फंक्शन को यूज़ करेंगे। So, the benefit of this block of code, or I will say the function, is that we are trying to reutilize the defined code already, है ना? तो हम बार-बार reusability को increase करना चाहते हैं हम फंक्शन का, उसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो पाइथन में यदि मैं फंक्शन की बात करूं, सो हाउ टू डिफाइन द फंक्शन इन पाइथन, है ना। तो पाइथन में यदि फंक्शन को डिफाइन करना है हमें, तो एक कीवर्ड होता है विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियोस। हमें डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। देन व्हाट वी विल डू, हियर वी विल राइट द फंक्शन नेम। हम फंक्शन का नाम देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर पैरामीटर्स पास करेंगे। एंड एज वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस वीडियोस कि भाई हम किस तरीके से इंडेंटेशन या ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं। तो हमने लूप कंट्रोल के टाइम पर देखा था, कंट्रोल स्टेटमेंट्स के टाइम पर देखा था कि यदि हम कोलन यूज करके एंटर हिट कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग दैट पर्टिकुलर इंडेंट जहां से हमें ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट करना है। सिमिलरली फॉर दिस फंक्शन नेम इज सपोज इज देयर, देन पैरामीटर्स आर देयर, then here is the block of code. Then one important thing is there, whenever in a Python we create any kind of block of code, that can be your class, that can be your function, and any other object that we are creating in the Python, it is always a good practice to write the documentation, है ना। तो हम इसके अंदर डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग को कर सकते हैं यूज, जो हमने देखा था ट्रिपल कोट का यूज कर सकते हैं। तो सपोज आई एम जस्ट राइटिंग हियर, दिस इज ए फंक्शन, क्योंकि जब हम इसके लिए हेल्प कॉल करेंगे सिर्फ टैब से तो इट विल बी गिविंग दिस डॉग स्ट्रिंग की व्हाट इज द रोल ऑफ दिस फंक्शन एक्चुअली, है ना। सो लेट वी विल सी दिस। उसके बाद हमें इस फंक्शन में अपना कोड लिखना है ना, ब्लॉक ऑफ कोड। सो दिस इज व्हाट द वे टू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन। हमने एक फंक्शन को डिफाइन करा और उसके बाद हमने उसके अंदर पैरामीटर्स पास करे, हमने उसकी डॉक स्ट्रिंग ली और फाइनली हम उसके अंदर कोड लिखते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, one more important keyword is here, that is a return. So during the definition of the function in Python, this there are two important things. One is def keyword, that is mandatory to write a function, and second one is one more keyword, that is a return. So this is a actually optional keyword that need to be used during the definition of the function. What does it mean? मैंने इस फंक्शन को डिफाइन करा है एंड यदि मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर रहा था और मैंने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया होता, दिस, let I run this code first. So can you see this? We are not getting any kind of error from the Python virtual machine. Even we have passed the return statement. Now, similarly, let I take this code here and when I remove this return statement here, and when I run this code, can you see again we are not having any error. It means that this once we are defining the function, it is not mandatory to return something. यदि हम उसको रिटर्न नहीं करते हैं तो क्या होता है, रिटर्न नहीं करने पर जो फंक्शन है आपका उसके लिए पाइथन वर्चुअल मशीन बाय डिफॉल्ट आपके लिए नन रिटर्न करती है ना, दैट वी विल सी इन आवर एग्जांपल्स। तो
यूजर डिफाइंड फंक्शंस को बनाने का तरीका जो पाइथन में है वो हम इस तरीके से करेंगे। तो अभी तक आपने जो देखे हैं फंक्शंस जो हमने यूज करे हैं पाइथन में, देयर आर टू काइंड्स ऑफ फंक्शन बेसिकली। वन इज बिल्ट इन function that we have used, like we have used the id, type, input, eval. There are a lot of function that we have used. Fine. Second one is the user defined function. This is what the way to define the user defined function. This is what the way to define the user defined function. अब देखिए, जब भी मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर चुका हूं तो इस फंक्शन को यदि मुझे यूज करना है तो कहीं ना कहीं मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। सो दिस स्टेप इज नथिंग, वी हैव डन अ फंक्शन डेफिनेशन। दिस इज द फंक्शन definition. Now, if I want to use this function, I have to call this functions. How I will call this function? Suppose that the func underscore name is there. And, right now, I have used the syntax here. So when I run this code, can you see it is asking for one parameters? है ना? So it is asking some positional parameters. Suppose just to avoid this error, I am passing here the Rahul, and you are getting nothing as output. है ना? तो कहीं ना कहीं हमने इस फंक्शन को कॉल करा है. So this is what the way to have function. जब भी हम फंक्शन को या ब्लॉक ऑफ कोड को हम फंक्शन में लिखने की कोशिश करते हैं, तो हमें उसको फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है, और जब भी हम इस फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है ना? और इसमें हमने क्या देखा कि फॉर फंक्शन द डेफ इज अ मैंडेटरी कीवर्ड एंड रिटर्न इज नॉट द मैंडेटरी कीवर्ड। यदि मैं इस फंक्शन को प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कॉल करता हूँ, मैंने कॉल दिस फंक्शन इनसाइड द प्रिंट स्टेटमेंट एंड लेट आई रिमूव दिस रिटर्न। When I run this code, can you see the output is none? What does it mean? मैंने जब इस फंक्शन में कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट पास नहीं करा, इट मीन्स दैट आई एम रिटर्निंग नथिंग फ्रॉम द फंक्शन। तो बाय डिफॉल्ट जो पाइथन वर्चुअल मशीन है, इट विल रिटर्न यू द नन डेटा टाइप दैट विल बी पास्ड एज आउटपुट। तो वो नन जो है प्रिंट फंक्शन को एज आउटपुट मिला है फंक्शन नेम से, एंड वी आर हैविंग द नन एज आउटपुट। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, वी हैव डिफाइंड, वी हैव नॉट यूज्ड द रिटर्न कीवर्ड, but by default we are receiving the none. Suppose instead of this, I want to return something. So I take this code here, and instead of this, suppose instead of this पास हमने देखा था कि पास का यूज हम क्या करते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड को बना के रखने के लिए, जिसमें लेटर हम कुछ डेटा को यूज कर सकते हैं ना। तो इंस्टीड ऑफ दिस कोड, इफ सपोज आई एम रिटर्निंग, when I run this code, can you see the output is 1. So by default, if you're not passing any return statement, you will be getting a none as an output from the PBM. Otherwise, if you're returning something, so you will be getting as a return. So this is what the way to define the function as well as to call this function. Suppose yes, I have used this function, and I want to call this function here func underscore name. And when I do the shift tab in a Jupyter notebook, you will be using a shift and tab. So can you see this? By this, you will be able to see this help. It will give you where this is defined, where that what is the kind of this object, that is a function that I'm going to discuss right now. And this is what this is function. So what I want to explain to you, whatever I have written in the dog string form, this help will give you the डॉग स्ट्रिंग फॉर्म। सो दिस डॉग स्ट्रिंग फॉर्म जो है आपको, इस डॉग स्ट्रिंग फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है कि दिस इज अ फंक्शन। तो इस तरीके से हम उसकी हेल्प में देख पाएंगे कि एक्चुअली हम इस फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, व्हाट वी वांट टू डू इन दिस फंक्शन बेसिकली। सो एक एक इंपॉर्टेंट बात है, मैंने यहाँ पर आपसे हर बार बोला है कि ना पाइथन एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। सो देयर इज डेफिनेटली वन क्वेश्चन इज हियर, is this function which I have defined, is it a object? So let me try to have the type of this func name. Underscore name. Okay.
So can you see this, the class function? It means that this is returning the type of this func name is the class function. So this function is also the object. This function name is also the um, working as a object here, है ना? यदि मैं इसको print करता हूँ, so we will be able to see the location like func underscore name and this. So can you see this? This is what the function which is defined at some particular memory location. So it is also important. The function is also the object. Whenever you are creating any user defined function here, yeah, this is in terms of the object, because we are getting a class that is a function class and as a return value of the type. So let me define one function formally. Suppose I want to define one hello world. So I'm defining hello, and in this right now I'm not passing any parameter. So parameter is what that you can see. This is what the prototype of the function completely. This is the function name and this is what the parameter. Parameter क्या है? Parameter वो है जिसमें हम अपने actual और formal arguments जो है पास करते हैं, है ना? So I will discuss what is the actual and formal arguments, है ना? तो पहले हम इस function को define करते हैं और suppose my objective is to print hello everyone. And this is what the function I have defined. What I need to do, just simply I will call this hello and you're getting the output as a print hello everyone. तो मैंने क्या करा, एक ब्लॉक ऑफ कोड आपके सामने डिफाइन कर दिया है कि भाई ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन हेलो को मैंने कॉल करके यूज कर रखा है. सो दिस इज व्हाट द वे टू डिफाइन द यूजर डिफाइंड फंक्शन. और बिल्ट इन फंक्शंस जो हमारे पास हैं स्टोर्ड हैं ऑलरेडी, हम उनका तो यूज करते ही हैं, है ना? सो लेट मी डिफाइन मोर फंक्शंस हियर. Suppose I am defining a function. Let me write a function to accept two numbers as input and return sum. This is what the code we want to write. How we will do this? Suppose for this we are defining one add function, and this add function we are passing two arguments because we are taking from the user. Then we have to write this block of code indent, and what I will do, just simply return x plus y. So to utilize this function, what I will do, I will simply write result is equal to add. Suppose I am taking two values, that is a 2 comma 3. When I run this code and when you print result, you are having output as a 5. इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन ने हमें दो आर्ग्यूमेंट्स इनपुट लिए और उसको ऐड करके रिजल्ट में स्टोर कर दिया. मैं चाहता था उसका डेटा रिजल्ट में स्टोर करने के प्लेस पर, क्योंकि एक्चुअली दिस रिटर्न वैल्यू रिटर्निंग द रिजल्ट. यदि मैं इसको इस तरीके से भी कॉल करता हूं at 2 comma 3, I'm getting the same output here. Okay, so this is what the way by which we have defined one function which is taking two arguments and returning the sum of that. Let me create some more functions to understand the function more clearly. Let me have one program. So we are writing a function to check whether the given number is even or odd. तो हम किस तरीके से करेंगे? वी नीड टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर और फिर हमें चेक करना है कि भाई क्या है, ये इवन है या ऑड है. सो फॉर दैट वी हैव टू डिफाइन वन फंक्शन. तो हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, दैट इज इवन अंडरस्कोर ऑड फंक्शन. इस इवन अंडरस्कोर ऑड फंक्शन में वी आर पासिंग वन नंबर and we start this. We know the code. What is the code? This num mod2 is equal to 0. Then what we will return? We will return the print number is even. Else what is here? Else print number is odd. So this is what the function है ना. अब मैं यूजर डिफाइंड वैल्यू के लेना चाहता हूं यहाँ पर, एंड आई वांट टू कॉल दिस. सो आई विल टेक फ्रॉम द यूजर, एंटर द नंबर
take input from the user. We know this, the input return the string, so we need to convert it into the integer, enter the number to check. Then when I pass this, when I use this even underscore odd function, pass this num, when I run this code and it is asking for the number, when you run this, so number is even. This is what the function we have defined. The same code we were able to write without the function, but we need to understand that how to use the function to find out the even and odd number. Let me take one more program here. Let me write a function let me write a function to find the factorial of a given number. That is a very important function. Sometimes it is asked in the various placement activities. So you need to write a function to find the factorial of a given number. So how to find the factorial of a number? We will be defining one fact function that will take the number as an input. And what is the code for this? We have to take one variable that is a result फैक्टोरियल के प्रोग्राम बनाने के लिए, और हम उसको स्टार्ट किससे करते हैं, 1 से। और हम कब तक चलाते हैं इसको? जब तक कि हमारा जो नंबर है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर हम क्या करेंगे? हम इस रिजल्ट में जो हमारा नंबर है हम उसको मल्टीपल करते जाएंगे, इट विल गिव यू द equal to number. It will give you the output in a result that is a factorial of that number. And what we need to do after this, we have to decrement the number by -1. What is it? To 1. And finally, what we will do? Just we will be returning the return result. So this is the code. This is the code to write a function to have factorial. So let me use this function. Suppose I want to print the factorial of 5. Fact of 5. When I run this code, so you are getting us a return. Okay, so it should be return. है ना? ये errors भी आपको समझना जरूरी है. Again, what is the error? RETURN. Okay, fine. It could be the insert key here. The return result. Okay. When you run this code, you can see this is the 16. Why it is the 16? That should be 120. There is something wrong. Just a minute. Factorial 5 num is greater than equal to 1. Result. Okay, that should be multiple, not addition. Now when I run this code again, you are having the 120. So this is what the program for the factorial. So can you see with these examples as well as with the definition of the user defined function, we could be able to define the function as well as we know that how to define the user defined function. And उस block of code में हमें mandatory keyword क्या है, def है, return is optional, but we should have good practice to write the doc string also because it is helpful to find out the help. यदि देखिए मैं इस फंक्शन के बारे में बात करता हूँ ना, if I check for the fact function which we have defined and do the shift tab, can you see you are having no doc string? That somebody who is using your function will not be able to understand what exactly this function is doing. So it is always a good practice to write the doc string. And instead of this, I was doing like this, a function for Fourier calculation. Again, when I run this code, and for this particular, if I do the shift tab, can you see this is the function for factorial calculation? So this is what the doc string है. Where is the importance of the doc string? अब हम एक चीज देखते हैं. We know in a Python everything is object. है ना? So in a C++, you have seen at the various places, it do not return you the multiple values.
व्हाट डज इट मीन? सपोज मैं एक फंक्शन है, उस फंक्शन से सिंगल वैल्यू ही रिटर्न होगी हमारे पास, जैसे कि हमने रिजल्ट रिटर्न करा। But suppose I want return something that is in comma of this result. I want to return something else, one more parameter, one more values, two more values, and so on, so on. So that is what possible in the Python. So let me see practically how to do this. So that to define how to define a function which returns multiple values, right? तो यदि मैं एक फंक्शन डिफाइन करना चाहता हूं जो कि आपको मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करेगा, तो वो कैसे होगा? एंड दिस इज व्हाट द फैसिलिटी अवेलेबल इन द पाइथन, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दीज मल्टीपल वैल्यूज आर रिटर्न एंड व्हाट एग्जैक्टली द पाइथन वर्चुअल मशीन taking which kind of data type it is taking in the background. So let me define one function here. Suppose we want to define one function that is a calculator. We are passing two values here, a comma b. And what is my objective with this calculator function? I want that my function so return be in the subtraction, summation, multiplication, and division, but it should be written once at once. Means I don't want to define a different function to have same activity. So let's see this. Suppose I'm calculating the sum is equal to a plus b, then subtraction is equal to a minus b, then multiplication is equal to a into b. Okay, and finally the division is equal to, that is suppose a divided by b. Now with defining this function, what is my exactly objective? So I will be returning here, and I want to return the sum. Now subtraction, then I want to return multiple, and I want to return division. So can you see this? Instead of returning a single value, I am trying to return the multiple values, or I can see that I am returning the multiple objects. So when you see this, it's kind of illusion that you are returning the multiple objects, and even you can do in the Python. So let I run this code. Can you see we are not having any kind of error is here? तो जब हमारे पास कोई एरर नहीं है, इसका मतलब ये जो कोड है हमारा वो परफेक्टली रन कर रहा है. लेट आई कॉल दिस फंक्शन कैलसी. इस कैलसी में मैं आपको 10,20 पास करता हूं, एंड फाइनली व्हेन आई प्रिंट हियर is 10,20 and the function is calci. When I run this code here, can you see the output? That is a 30 minus 10, 200 and 0.5. So can I see the multiple values has been returned by your function? Yes, but let me check for it in terms of the data type. So suppose instead of doing this, I am taking the result, all the result by calling this function calci, and I take 1020. When I print this type of this result, I run this code. So can you see this? This function is returning the multiple values, but how this is returning? Collectively, these objects are written as a tuple object. Fine. So जब टपल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिटर्न किया गया है सारी की सारी वैल्यू को, तो यहाँ पर हम देख सकते थे कि आउटपुट उसको इसी तरीके से लिया गया है. बट सपोज आई वांट टू एक्सेस एंड प्रिंट द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ दिस रिजल्ट टू यू फॉर आई इन रिजल्ट, and I want to print individual value, that is I. So with the help of this code also, whatever the return value of the function, that it is returning the multiple values, but internally Python virtual machine is returning the tuple object to you all, so I can access individual value from the tuple and get the answer. So that is what the applicability of the function in terms of returning multiple values. Suppose at the same time I'm using the tuple unpacking, but it should be very much clear to everyone that how many number of arguments
we are getting in terms of the return from the function. Suppose we are expecting 4. So what I need to do, suppose sum, we are having the subtraction, and we are having the multiple, and we are having the division. And when I call this function and I write the print statement here, that is containing the sum, subtraction, it should be sub only, multiple, then I write the division. Fine. So when I run this code, can you see the output is 30 minus 10, 200 and 0.5. So what we have done, we have merged the function concept with the concept of tuple unpacking that we have discussed in the previous video. Tuple unpacking. But what is the constraint here need to be understand? If suppose it is returning the 4 values and we are trying to have 5 values star, then you will be getting a value error. So it is very much important that you are expecting, you got the 4 argument but you are expecting the 5. So it should be very clear in mind during this programming that how many values are returned by the function. So the tuple unpacking should be proper to utilize this function in terms of the direct value return from the tuple unpacking. So this is what the benefit of the Python function, that in the previous programming, it was difficult to have a multiple values one time. But you can see here it completely looks like that you are returning the multiple values from the function, although it is in terms of the tuple object from the Python virtual machine. Next, defining this function and we are able to return the multiple values. What we need to do now, we need to understand what kind of parameters we are all are passing here, है ना? तो पहले तो हमें पैरामीटर्स को समझना पड़ेगा डिटेल में. देखिए, पैरामीटर्स क्या होते हैं हमारे? पैरामीटर्स जो है, हम वट एवर द आर्ग्यूमेंट्स पास टू फंक्शन, दैट वी कॉल अ पैरामीटर. अब ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके, जो फंक्शन को पास करते हैं हम, ये दो टाइप के होते हैं. वन इज द फॉर्मल एंड सेकंड वन इज द एक्चुअल. तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कैसे होते हैं? सपोज वी आर डिफाइनिंग वन फंक्शन हियर. सपोज आई एम टेकिंग दिस वन ओनली, that is your yes, the same function here. So the a comma b, which is here, that we call a formal parameter. So for this particular function, the formal parameter is what? A comma b. But at the time of function calling, whatever the argument we pass to the function, that we call a actual argument. तो actual argument क्या है हमारे, जो हमने 10, 20 पास किया है ना? तो we need to understand the parameters in a function is the way to give the input during the function definition. Whatever the parameters we are having, that is a type of formal, and whenever at the time of calling, when we pass a data to the function, that is a basically actual. सो अब हम एक चीज और देखते हैं पाइथन में. एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स को पास करने के बेसिस पर जो टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको डिवाइड किया गया है ना. सो ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. तो 4 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट जो हमारे पास है, वो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं? फर्स्ट वन इज अ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, सेकंड वन इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, थर्ड वन इज default argument, last one is variable length argument.
very clear that this classification is not on the basis of the definition of the function, है ना? हम वहाँ पर फॉर्मल आर्गुमेंट के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं। हम इसको क्लासिफाई कैसे कर रहे हैं? हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं व्हेन वी पास द आर्गुमेंट टू द फंक्शन कॉलिंग, है ना? सो on the basis of the actual argument we are having the four types of argument passing in a python programming किसी भी फंक्शन के लिए कौन कौन से हैं? पोजिशनल आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट एंड डिफॉल्ट, दैट शुड बी डिफॉल्ट नॉट डिफॉल्ट, that should be default argument, and finally variable length argument. अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं ना. So let me start with positional argument. So what do you mean by the positional argument, है ना? That the arguments basically passed to function in correct positional order. What does it mean? यदि मैं सपोज एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, सपोज सबस्ट्रैक्शन, and in this I am defining two parameters, that is a formal parameters, and I just want to print a subtraction of a minus b, and when I call this sub function by taking two values 10 comma 20, when I run this code, so can you see the output is minus 10, but instead of this, similarly if I do like this 20 comma 10, is 10, what does it mean? जब भी हम पोजिशनल आर्गुमेंट जो कि पैरामीटर पासिंग का डिफॉल्ट वे है ना, देयर इज अ डिफॉल्ट वे टू पास द पैरामीटर्स, है ना, एक्चुअल इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट, तो हमें उसकी पोजीशन का याद रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज हमारा जो रिजल्ट है इट गेट्स सफर. तो पोजिशनल आर्गुमेंट क्या है? वी नीड टू टेक केयर ऑफ इंडिविजुअल value that we are passing, that should be in the correct positional order, because if we change the position we will be getting, sometimes we get the error or sometimes we get the change in the result. This is what all about the positional arguments. Now next one is the keyword argument. Okay, so what do you mean by keyword arguments? This point in your mind, whatever the classification we have, that is on the basis of the argument passing at the time of the function calling. So suppose I am defining one function here. पहले तो हम इसको लिखते हैं कि भाई कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है. So when we pass value by keyword. What do you mean by keyword? Means with parameter name. What does it mean exactly? So let me define one function here. Suppose I am defining one function. Suppose I will just simply define a wish function here. कि हम किसी को wish कर रहे हैं. And I am passing name. Then I am passing the message. Here I just print hello. And we are passing name, and suppose we are passing message here. So what I'm doing at the time of calling of this function, suppose I call this function, and at the time of calling of this function, suppose I pass the name is equal to Rahul, and we pass the message the home. When I run this code, what is the expected output is here? Hello Rahul, please go to the home. That we have defined in the function. But what is the importance of this keyword argument? In case of the positional argument, if we were changing the order, it means suppose I am writing the please go to the home first and then Rahul. So the meaning of that complete message will be changed. But what I do, suppose I am taking this function and here I am writing the message
is equal to please go to the home, and then I'm writing name is equal to Vasu. So when I run this code again, can you see the hello Vasu, please go to the home, and previously the hello Rahul, please go to the home. So the overall impact of the function has not been changed because what to refer the particular formal argument we have passed is at a name of that parameter. Okay, so it's a kind of passing which we call a कीवर्ड आर्गुमेंट पासिंग। तो इससे क्या हुआ, हमने पोजिशनल आर्गुमेंट्स को यूज ना करके कीवर्ड को करा, जिससे कि हमारी पोजीशंस चेंज हुई, बट हमारे जो फंक्शन है इसके ओवरऑल इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ओके, there always one question came with these about these two arguments. Can we use positional and keyword arguments together? The answer for this is yes, we can do this. What is to be taken care here? For doing this, first we need to take positional argument, then keyword argument. Means that if we are using the positional argument and keyword argument together in our function, we have to take care of the firstly position, then we can use the keyword argument. What does it mean exactly? Let me take one example. Suppose I'm defining same function here. Let I take this function here. When I run this code, and you can see this, I want to use this name as a positional and this message as a keyword argument. This message as a keyword argument. When I run this code, can you see the output? Hello Rahul, please go to the home. It means that this name is mapped to the name and message is mapped to the message of formal parameter. Because message has been passed as the keyword, but initial position was the name where where Rahul has been passed. But suppose for the same, if I do like this, here I pass please go to the home. When I run this code, although conceptually, if I see the name Rahul, name is equal to Rahul, it's having the order, and then we pass one value, please go to the home. That should be mapped to the message. But as per the concept of the Python and Python virtual machine working, this is not allowed. So if you want to use the positional argument with your keyword argument, the positional argument should be used first, then the keyword argument. So you're getting a error that positional argument followed keyword argument, but in the previous case you were not having any kind of error, it was working fine. So I hope this point is clear to everyone that first we need to take the positional argument, then keyword argument. तो हम कीवर्ड और पोजिशनल का एक दूसरे को इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं, बट विद दिस कंस्ट्रेंट. नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्गुमेंट विच वी हैव हियर, that is a default argument. So what do you mean by this default argument? What happens sometimes when we define a function, so during definition of function, give value that is a default value, the parameter. We give the default value to the parameter. In that case, we use the concept of default argument. What does it mean? Here, I am taking the same function. Whose name wish. Okay, this one is here. Here, I have passed the name is equal to
Here, suppose I pass the name is equal to Vasu by default. What is happening? Uh, During the call of this function, if I am not passing the name, and when I run this code, non-default argument follows the default argument. Just a minute, that we will discuss later. It should not be the message here. This should not be here. Okay. So I am here having without passing any name when I run this code. So you can see here is the hello Vasu. Instead of this, if I am using this Whisk code to have here I am writing the Rahul. When I run this code, so can you see this the hello Rahul instead of hello Vasu? So if you want to pass a default value to your argument, that should not be that it means that somebody is not giving any input during the function calling. That value should be print. So hello Vasu and hello Rahul is there. Now next point come here. Can we use the default argument with the non-default argument? Yes, we can use the default argument with the non-default argument. But condition is what? After default argument, can't pass non-default. तो अभी एरर जो एरर आपने देखी हुई थी अभी, what does it mean exactly? Suppose here I am taking name is equal to Vasu, and here I am passing the message. Let I take this code here, so it will be available in the notebook. And so here I am taking the Vasu, and finally I am writing here the message. Okay? Here I am printing the name, comma, message. Okay, when I run this code, can you see you're getting at the call of this name Vasu and message, non-default argument follows the default argument. What should be? This name cannot contain the Vasu. Message can contain greeting. When I run this code, you're having this error name is equal to name, comma. Okay, it should not be equal to here. Okay, word position argument name. Okay, name. Hello, yes. So can you see if this is what, and I call wish and pass here Rahul and run this code. So it is you are getting hello Rahul, and you have used this default argument in the last, but in a previous case like this, in a previous case we have used the non-default argument. Fine. So we cannot use the non-default argument after the default argument. So that is what the overall concept about the default argument. Next we come to the variable length. What is the meaning of this variable length argument? कभी कभी क्या होता है हमें जब हम आर्ग्यूमेंट को पास कर रहे होते हैं, सो ड्यूरिंग दिस आर्ग्यूमेंट पासिंग वी आर नॉट एबल टू डिफाइन द लेंथ ऑफ द आर्ग्यूमेंट. मतलब मैंने फॉर एग्जांपल मुझे एक नंबर ऑफ वैल्यूज का मुझे सम निकालना है ना. सो इनिशियली वी आर पासिंग वन, then we pass the 1 2 3, then we pass the 1 2 3 4. So for that particular we have to do the function overloading. हमें हर बार अलग टाइप का एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा और उसको ओवरलोड करके हमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स को बढ़ाना पड़ेगा. बट हियर इज वेरी गुड फैसिलिटी गिवन बाय द पाइथन दैट you will have a variable length argument situation. What does it mean? मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं, सपोज दैट इज फंक्शन f1, and suppose instead of this function let me define the function for the sum only. This sum function
will take a variable length argument to you. That is suppose n. So how to define the variable length argument? When you use this star in before your variable name, it will be assuming this variable as a variable length argument. एक बात बहुत clearly हम याद रखेंगे, there is no pointer type of concept in the Python. This is basically the variable length argument, है ना. अब हम इसको देखते हैं. Suppose we take one variable total. Our goal is to print the sum of this data. तो हम किस तरीके से करेंगे? For 0, for I in n. अब I in n ले रहा हूं मैं, it means that it is having some container type of data. So to understand this, what kind of data, let me print type of n. Then we run this code. So what I need to do, total plus equal to simply I. And finally what we will do, we will simply return when I call this function, that is print sum. And when I pass this one, you can see the output is 1 and the class is tuple. So it is very much important to everyone to understand this. This n is tuple internally for Python virtual machine. For the Python virtual machine, this is basically a tuple. That is what the reason we could be able to access the individual value in terms of the total plus equal to I. So that is finally sum is equal to 1. Now, without using the overloading, let I take the same code here. And here I pass 1, 2 and run this code. So can you see the output is 3? And similarly, I take here 1, 2 and 3. When I run this code, so output is 6. So what is the what is the benefit of to having this variable length argument is we are not defining the same function with the multiple parameters again and again. Even we are able to pass the variable length of parameters to have a output. So कहीं ना कहीं Python virtual machine ने variable length के concept को लाकर एक function overloading को हटाने की कोशिश की है ना. So in this variable length argument, I have taken a normal variable length argument. इस variable length argument में एक और concept होता है जिसको हम बोलते हैं keyword variable length argument. So keyword variable length argument is what? So keyword variable length argument का मतलब क्या है? Let me define one function. Suppose I want to define display, and just we want to display some items to you all, and here I am passing one keyword argument that is data. तो एक बात ध्यान रखना है आप सभी को कि यदि मैं नॉर्मल वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का यूज कर रहा हूं, आई हैव टू यूज वन स्टार, and if I am taking the data in terms of the keyword argument, you should have the 2 star. What does it mean? Let us print the type of this data. When you print the type of this data, and suppose I am print let I access the individual value, then you will when I write this code, you will be able that what exactly this data is. kb in data dot items. So in this data dot items, what I'm doing, just simply print k comma v. So at the type of calling, suppose I write here display and I'm writing name is equal to Rahul, comma age is equal to 36, address is equal to Vidisha. Run this code. Can you see the output? The output is name Rahul, age 36, address is equal to Vidisha, and can you see that class is dictionary? If I print this print data in front of you,
It means that whenever you're passing the keyword variable length argument data, it is containing the data in the form of the dictionary only, and we are accessing the individual key and value pairs and printing in front of you. So that is what the another way to pass the keyword variable length argument. So till now in this video, what we have discussed, we discussed about the functions basic, how to define the function, user defined function, what are the built-in functions, and then we have discussed about what are the kind of various kind of types of arguments. So in this we have seen positional, default, variable length arguments here, है ना, and we have seen the keyword argument as well. आपने देखा कि ये कहीं ना कहीं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, चाहे वो नॉर्मल वेरिएबल लेंथ हो या कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट हो, इन सभी में हमने कोशिश की है एक फंक्शन ओवरलोडिंग को रिमूव करने की पाइथन के कॉन्सेप्ट से, और वी आर यूजिंग द मल्टीपल काइंड ऑफ पैरामीटर्स एट द फंक्शन कॉलिंग. So it's over from my side for this video. Thank you for watching.